રાજ્યમાં છૂટો છવાયો વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। આગામી 24 કલાક માટે હવામાન વિભાગ દ્વારા મધ્ય વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ છે, તો સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા અને અરવલ્લીમાં પણ વરસાદનું યલો એલર્ટ અપાયું છે। સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠામાં હળવા વરસાદની આગાહી, તો અરવલ્લીમાં યલો એલર્ટ સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે। અમદાવાદમાં પણ હળવાથી મધ્ય વરસાદ રહેશે, જેમાં અત્યાર સુધી રાજ્યમાં જો વાત કરીએ તો 19% વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। तो वर्तमान में मौसम प्रणाली है, उसमें अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है अपनी नॉर्थ गुजरात एडजॉइनिंग साउथ राजस्थान के 3.1 किलोमीटर अबव सी लेवल, और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी एंड नेबरहुड, वो 5.8 पे है। तो इनके प्रभाव से जो अगले 7 दिनों में है लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है गुजरात में। और देवल में येलो अलर्ट रखा गया है नॉर्थ गुजरात रीजन के लिए, जिसमें साबरकांठा, अरावली और महिसागर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रेनफॉल की बात करें, अभी तक जो मानसून रेनफॉल हुई है गुजरात रीजन में 21% ज़्यादा हुई है नॉर्मल से, और सौराष्ट्र कच्छ में 16% ज़्यादा हुई है। कुल मिलाकर अगर स्टेट की बात करें तो 19% रेनफॉल अभी तक साउथ वेस्ट मानसून में एक्सेप्ट रही है।